Hello students, in this video we will learn how to estimate national income. But before knowing about different methods of estimating national income, estimating national income, first we should go through with some basic concept related with the conversion. Okay, some kind of conversion we have to know before knowing different estimation methods of income. फर्स्ट कन्वर्जन एज हम जैसे हम नेशनल इनकम पढ़ेंगे वी विल कम टू नो अबाउट डिफरेंट टर्म्स लाइक डोमेस्टिक इनकम, नेशनल इनकम और डोमेस्टिक प्रोडक्ट और नेशनल प्रोडक्ट. ओके, और नेट वैल्यू और नेट इनकम, नेट प्रोडक्ट और ग्रॉस प्रोडक्ट और ग्रॉस वैल्यू, एंड सेम एज नेशनल इनकम और नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट और नेशनल इनकम और नेशनल प्रोडक्ट्स एट मार्केट प्राइस. तो यहाँ पर कुछ बेसिक टर्म्स हमारे पास में आएंगी. तो इन टर्म्स के लिए हमें क्या करना है, वी शुड नो हाउ टू कन्वर्ट दीज वैल्यूज इन अदर टर्म्स. फर्स्ट ऑफ ऑल I will tell you how to convert domestic income or domestic product into national income or national product. Okay, domestic income plus NFIA gives national income. NFIA is what? NFIA is net factor income. It may be to or it may be from. Net factor income from the abroad. Okay, but if it is given in the form of 2, then we have to subtract it. Remember one thing, net factor income from abroad we have to add. There will be addition of NFIA if it is given in form of from. अगर आपको नेट फैक्टर इनकम दे रखा है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड, इट मीन्स यू आर रिसीविंग नेट इनकम फ्रॉम अब्रोड, देन यू हैव टू ऐड. Addition will be there. But if net factor income is given in the form of 2, it means we are paying income to foreign countries or to rest of the world. In that case we have to subtract it. Okay, if net factor income is given in the form of 2, then subtraction will be there, and if it is given in the form of from, in that case addition will be there. एक बार फिर बता देती हूँ, डोमेस्टिक इनकम को नेशनल इनकम में कन्वर्ट करने के लिए हमें जिस चीज़ की ज़रूरत है वो है आपका नेट फैक्टर इनकम. ओके, ये नेट फैक्टर इनकम अगर फ्रॉम है, फ्रॉम होगा तो वी विल रिसीव. ठीक है ना, अगर हम रिसीव करेंगे इन दैट केस वी विल ऐड दिस वैल्यू. एंड इफ नेट फैक्टर इनकम इज गिवन इन द फॉर्म ऑफ 2, अगर आपको दे रखा है नेट फैक्टर इनकम टू द अब्रोड और टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, इन दैट केस वी विल सब्ट्रैक्ट इट. अगर 2 की फॉर्म में है, इसका मतलब वी आर पेइंग टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, हम फॉरेन कंट्रीज को पे कर रहे हैं नेट फैक्टर इनकम. ठीक है, तो यहाँ पर जब हम पे करेंगे तो वो हमारे अकाउंट में से माइनस होगा, और अगर हम रिसीव करेंगे तो वो हमारे अकाउंट में ऐड होगा. सेम थिंग यहाँ पर भी नेशनल इनकम के एस्टिमेशन में भी हमें यूज़ करना है. जब आप डोमेस्टिक इनकम को कन्वर्ट करोगे नेशनल इनकम में, तब आपको NFIA को इसमें ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है. ऐड कब करोगे? जब आप रिसीव करोगे, जब आपके पास नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड होगा. सब्ट्रैक्ट कब करोगे? जब आप फॉरेन कंट्रीज को, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को पे करोगे. और पे कब करोगे? जब आपके पास में नेट फैक्टर इनकम टू अब्रोड होगा. ठीक है, नेट फैक्टर इनकम टू अब्रोड है तो हमें क्या करना है, माइनस करना है. नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड है तो हमें इसमें क्या करना है, प्लस करना है. ओके, इज दैट क्लियर? नेक्स्ट कन्वर्जन, नेट वैल्यू एंड ग्रॉस वैल्यू. आपका हम द वैल्यू विच वी आर एस्टिमेटिंग, ओके, एट नेशनल लेवल, जो नेशनल इनकम हम एस्टिमेट कर रहे हैं फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की, वो नेशनल इनकम की वैल्यू को हम 2 टर्म्स में मेजर करते हैं. एट फर्स्ट लेवल नेट वैल्यू एंड सेकेंड इज ग्रॉस वैल्यू. बट नेट वैल्यू इज दैट वैल्यू इन विच वी आर नॉट एडिंग डेप्रिसिएशन. ओके, एंड ग्रॉस वैल्यू इज दैट वैल्यू इन विच द actual value of the final goods and services is having
द वैल्यू ऑफ रियर एंड टीयर ऑल्सो, जिसमें हम डेप्रिसिएशन की वैल्यू को भी ऐड कर देते हैं. इन दैट केस वी विल गेट ग्रॉस इनकम. ओके, तो नेट टू ग्रॉस आपको ये ध्यान रखना है. नेट इनकम टू ग्रॉस इनकम कन्वर्ट करने के लिए वी हैव टू यूज डेप्रिसिएशन. नेट में कितने वर्ड्स होते हैं? 1 2 3, ओनली 3 वर्ड्स आर देयर. इट मीन्स नेट वैल्यू जो है वो आपकी कम होगी एंड ग्रॉस वैल्यू जो है वो आपकी ज़्यादा होगी. ठीक है, अब नेट वैल्यू जो है NET, तो इसको ग्रॉस के बराबर, इसको इक्वल करने के लिए, नेट को ग्रॉस के बराबर करने के लिए हमें इसमें ऐड करना पड़ेगा. जो वैल्यू कम होती है उसको बड़ी वैल्यू के बराबर करने के लिए आपको क्या करना होता है? कम वैल्यू में कुछ ना कुछ टर्म ऐड करनी है. तो हम यहाँ पर नेट में क्या ऐड करेंगे? डेप्रिसिएशन. एंड डेप्रिसिएशन इज ऑल्सो नोन एज कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल और कंजम्पशन ओवर फिक्स्ड कैपिटल. ओके, you can use consumption of also, consumption of fixed capital. 2 टाइप ऑफ कन्वर्जन आप लोगों को पता चल गया है. फर्स्ट वन, नेशनल इनकम फ्रॉम डोमेस्टिक. नेशनल इनकम एस्टिमेट करने के लिए वी नीड डोमेस्टिक प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड. इफ इट इज गिवन इन फ्रॉम और वी आर receiving income from the rest of the world, in that case we will add the value. And if we are paying to rest of the world, in that case we will subtract the value. Okay, first concept. Second, net to gross, net value and gross value. स्पेलिंग्स को कंपेयर करो. नेट में 3 लेटर है, ग्रॉस में 5 है. छोटा लेटर कौन सा हुआ? छोटा वर्ड कौन सा हुआ? नेट. ज़्यादा लेटर्स किस में है? ग्रॉस में. तो नेट को ग्रॉस के इक्वल करने के लिए आप नेट के अंदर कुछ टर्म ऐड करोगे और वो टर्म जो ऐड हो रही है वो कौन सी है? डेप्रिसिएशन. ठीक है, ग्रॉस वैल्यू इज हैविंग द वैल्यू ऑफ डेप्रिसिएशन एंड नेट वैल्यू प्लस डेप्रिसिएशन गिव्स ग्रॉस वैल्यू. नेक्स्ट टर्म, थर्ड कन्वर्जन. Whatever we are estimating or calculating national income, that is given in term of factor cost or at market price. So third conversion is about that. National income at factor cost, national income at market price. Factor cost means within the production boundaries. इट मीन्स यहाँ पर अभी तक जो प्रोडक्ट की वैल्यू है वो उसकी कॉस्टिंग लेवल पर है. बट व्हेन द प्रोडक्ट इज इन द मार्केट, इन दैट केस it is on that product different type of taxes are levied. Okay, different type of taxes and producer or supplier जो है they are receiving different kind of subsidies also. So to convert factor cost value, the national income or national product at factor cost, if we want to convert this value into market price, फैक्टर कॉस्ट को मार्केट प्राइस में कन्वर्ट करने के लिए वी नीड नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस. हमें इसमें NIT की ज़रूरत होगी. व्हाट काइंड ऑफ वैल्यू वी रिक्वायर? NIT, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस. एट FC मीन्स नेशनल इनकम एट फैक्टर कॉस्ट. MP मीन्स नेशनल इनकम एट मार्केट प्राइस. नेक्स्ट, NIT. NIT, what is NIT? Net indirect taxes. And NIT is equals to indirect taxes minus subsidies. Okay? It is equals to NIT equals to indirect taxes minus subsidies. This is the basic conversion which you have to know before estimating the national income by using different methods. एक बार फिर से समझ लीजिए आप लोग, 3 कन्वर्जन मेथड्स कौन से हैं. सबसे पहला डोमेस्टिक से नेशनल में कन्वर्ट करना है एंड फॉर द कन्वर्जन ऑफ डोमेस्टिक टू नेशनल वी रिक्वायर नेट फैक्टर इनकम फॉरेन कंट्रीज से होने वाली.
ठीक है। अगर हम फॉरेन कंट्रीज से नेशनल इनकम फैक्टर इनकम जो है वो रिसीव कर रहे हैं, नेट फैक्टर इनकम रिसीव करेंगे, तो ये आपका होगा नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड, और इसको हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। और अगर NFIA आप पे कर रहे हो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में, तब आप क्या करोगे, सब्ट्रैक्ट करोगे और नेट फैक्टर इनकम टू अब्रोड होगा। ठीक है, ये NFIA क्या है, नेट फैक्टर इनकम, यहाँ 2 है, इसका मतलब टू अब्रोड। और ये है NFIA फ्रॉम, तो ये होगा आपका नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड। ओके, नेट फैक्टर इनकम टू अब्रोड को माइनस किया जाएगा, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड को प्लस किया जाएगा। सेकेंड कन्वर्जन, एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब भी आप नेशनल इनकम का एस्टिमेशन करेंगे, उससे पहले कोई भी मेथड, वॉट एवर मेथड यू आर यूजिंग, यू शुड नो अबाउट द बेसिक कन्वर्जन। एंड अगर आपको ये वैल्यूज़ नहीं आती हैं, इट मीन्स यू कांट डू you can calculate the value of national income। सेकेंड कन्वर्जन मैंने आपको बताया था, नेट से किस में करना है, ग्रॉस में। नेट और ग्रॉस, नेट वैल्यू में कम लेटर्स, नेट जो आपका वर्ड है, जस्ट एक ट्रिक है ये लाइक दैट कि नेट जो है इसके अंदर कितने लेटर्स हैं, 3 लेटर्स आर देयर। ग्रॉस के अंदर आपके पास में कितने लेटर्स हो गए, 5 लेटर्स आर देयर। तो ग्रॉस वैल्यू इज ग्रेटर एंड नेट वैल्यू इज लेसर। तो ग्रेटर वैल्यू को लेसर को इक्वल करने के लिए, ठीक है, हमें क्या करना होगा, जो वैल्यू कम है उसमें हमें कुछ ऐड करना होगा। एंड हियर नेट वैल्यू में हम क्या ऐड कर रहे हैं, डेप्रिसिएशन। वी आर एडिंग डेप्रिसिएशन इन नेट वैल्यू। और डेप्रिसिएशन, आफ्टर एडिंग डेप्रिसिएशन वी विल गेट ग्रॉस डेप्रिसिएशन। द टर्म डेप्रिसिएशन इज ऑल्सो नोन एज कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। थर्ड कन्वर्जन, national income at factor cost and national income at market price। फैक्टर कॉस्ट टू मार्केट प्राइस में कन्वर्ट करने के लिए जो भी हमारी कॉस्टिंग है, प्रोड्यूसर की जो कॉस्ट आती है, वॉट एवर द कॉस्ट जो भी प्रोड्यूसर के ऊपर आ रही है, ठीक है, विच इज़ देयर, जो भी कॉस्ट है अपनी, उस कॉस्ट में हमको क्या करना है, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को ऐड करना है। एंड नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस इक्वल्स टू इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडी। इनडायरेक्ट टैक्सेस जितने भी उस प्रोडक्ट के ऊपर लगाए जाएंगे, डिफरेंट टाइप ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस आर देयर, वो सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस को हमें इसमें क्या करना होगा, ऐड माइनस सब्सिडी। ओके, तो हमें क्या मिल जाएगा, फैक्टर कॉस्ट प्लस NIT गिव्स the value at market price। Next, few terms related with national income. When we are talking about national income, in that case national income is simply, national income we can say that it is equals to NNP. National income is equals to NNP. National income is also known as NNP at FC. NNP at FC means net national product at factor cost. Okay, क्या है इसका मतलब, net national product at factor cost। And if we are talking about domestic income, in that case it is equals to domestic income. Domestic income is equals to NDPFC. NDPFC means net domestic product at factor cost. Few terms are there. All these terms are like GDPFC. What is GDPFC? GDPFC is the abbreviation
which is using for gross domestic product at factor cost. GDP-MP, gross domestic product at market price. GNP-FC is gross national product at factor cost. GNP-MP is gross national product at factor cost. NDP-FC means domestic income. What is that? Net domestic product at factor cost. And NDP-MP, net domestic product at market price. And national income, that is NNP-FC. आपको हमेशा ध्यान रखना है कि NNP-FC जब हम बात करते हैं इसका मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट नेशनल इनकम. And when we are talking about domestic income, it is equals to NDP-FC. Is that clear? Few terms you have to keep in your mind. GDP, GNP, GDP at FC, GDP at MP. NDP, NDP at FC, NDP at MP. GNP and NNP at FC and GNP and NNP at MP. अब इसमें दो टर्म्स जो इम्पॉर्टेंट है, फर्स्ट वन नेशनल इनकम, सेकेंड वन डोमेस्टिक इनकम. नेशनल इनकम मीन्स NNP-FC, डोमेस्टिक इनकम मीन्स NDP-FC. Okay, and what is the definition of domestic income? Domestic income refers to the money value of all kind of domestic products or final goods and services which are produced in the economy during the financial year. This is called domestic income. Okay, and when we are adding the value of the depreciation value for all final goods and services in NDP-FC, then we will get an NP-FC. Okay. Domestic income is refers to NDP-FC or NDI-FC. N net, D for domestic, P for product, and FC stands for factor cost. NDP at factor cost or NDI at FC, it means net domestic income at factor cost. दोनों ही terms same है, no difference is there. And what is the definition of domestic income? Definition of domestic income you can give in a very simple word. और 12th स्टैंडर्ड में भी आप लोगों ने ये पढ़ा हुआ है. NDP-FC, NDI-FC refers to the money value of all goods and services which are produced in domestic territory during the financial year. This is called national income. And about domestic, we have discussed about domestic income. Next term is national income. National income refers to NNP-FC or same as NNI-FC. You can also use what term you can use? NNI-FC. NNI or NNP. Okay. NNP-FC refers to money value of all final goods and services produced in domestic territory during the financial year, but if this value include NFIA, if it is including NFIA, it is called NNP-FC. और if you will exclude NFIA, तो आपको क्या मिल जाएगा? NDP, यानी कि domestic income. Yes, next topic is the definition of domestic income and national income. Domestic income always represents NDP-FC